And the big story this evening, ladies and gentlemen, it's the biggest betrayal against Bharat. Rabul Rouza, Muslim cleric, is back, and this time he has once again given an open call for a Muslim Rashtra. The Congress-backed cleric has stoked a massive controversy, saying those who speak of Hindu Rashtra should be charged with sedition law. But what he said next is appalling. He said Muslim youth may also ask for a separate Muslim Rashtra, and will that be okay? Listen in first up to the statement he's raised and all the reactions that are coming into that right after that. वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वक्त वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो किसी हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र. Let me remind you that this is not the first time when the Congress-backed cleric has spewed venom. Remember, he had threatened earlier that when Muslims rise, Hindus will have no place to hide. He even called alleged terrorists killed in Batla. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कमजोर नहीं है. माननीय नरेंद्र मोदी जी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए और उन तमाम दुर्योधनों और दुशासनों पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर सख्ती करनी चाहिए. उन पर जब तक सख्ती नहीं होगी, क्योंकि ऐसे दुर्योधन और दुशासन हर जिले में गली गली घूम रहे हैं. एक द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी, साड़ी खींचने की कोशिश की थी, लेकिन आज के दुशासन गली गली मौजूद हैं जो हमारी बेटियों की नकाब खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है. गया मॉब लिंचिंग, 100-200 कुत्ते इकट्ठे होके एक शेर को मार डालें, ये मर्दानगी नहीं है. अगर मर्दानगी की बात है तो मैं फिर कहता हूं कि हमारी लड़ाई हमारे खून में है, लेकिन हम अपने मुल्क का अमन व अमान बिगाड़ना नहीं चाहते. हम अपने देश में शांति रखना चाहते हैं और अगर लड़ने का शौक है तो मैदान में लड़ाई होगी. इस तरह मॉब लिंचिंग करना और घेर के किसी एक को मार डालना, ये इंसाफ नहीं है, ये मर्दानगी नहीं. हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी राष्ट्र, या हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि तिलकधारी हिंदू, चुटिया वाले हिंदू. तो राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके. मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं, खुलकर चेतावनी देता हूं कि अगर इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मुझे अंदेशा है. Trying to clinch it, Tawqir Raza, by trying to turn the tables on the BJP netas calling for Hindu Rashtra. जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उन लोगों को एहसास होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की आवाज़ बुलंद करने से वो लोग जो खालिस्तान की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको ताकत पहुंचती है. और ऐसे बयानात का फ़ायदा अगर सबसे ज़्यादा किसी को होगा तो वो आरएसएस व भारतीय जनता पार्टी को होगा. शायद ये बयान इसीलिए दिया गया हो कि बीजेपी को मजबूती मिले और आरएसएस को ताकत मिले. ऐसे बयानात की जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, इतना कम है. आरएसएस मुसलसल भारत को एक थियोक्रेटिक राष्ट्र की तरफ ढकेल रही है. हमारी सारी संवैधानिक संस्थाओं को, हमारे सारे जो सुपर हमारे संस्थान हैं उसको जो है सैफनाइज करने का काम वो जब से 14 का रिजीम आया है तब से ये हो रहा है. हम ये कहेंगे कि चाहे कोई खालिस्तान की मांग करे, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करे या उसके लिए देश में कुछ तूफान मचाए, या हिंदू राष्ट्र की बात, सीधे यूएपीए लगाकर अगर कोई पॉसिबिलिटीज़ बने तो ये जो कैलासा कंट्री बनी है वहाँ भेज देना चाहिए कि ज़िंदगी भर वापसी ना हो भारत के अंदर. जिनको भी खालिस्तान राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, उनको कैलासा देश भेज दीजिए आप. Interestingly, the RSS has come out to slam Maulana Tawqir on expected lines, saying that this is an attempt being made on part of Maulana Tawqir Raza to break India, that this is a break India forces
currently present everywhere, currently at play, calling out the tukde tukde mindset of Maulana Tauqir Raza. हम करना चाहते हैं। तो एक मिनट, दूसरा आपने जो कहा देश तोड़ने वाली शक्तियां हर जगह काम करती हैं, तो चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधानी रहनी पड़ेगी। उस दृष्टि से भी हमारा प्रयत्न है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में जो वीकर सेक्शंस होते हैं समाज में इस प्रकार के, वहाँ कन्वर्शन करके विदेशी हित में करने के लिए प्रयत्न करके जानबूझकर भारत विरोधी करने का प्रयत्न होता है, वहाँ चौकन्ना रहेंगे। वहाँ उसको रोकने के लिए स्थानीय समाज जागरूक हो, प्रयत्न हम करेंगे। समाज के अंदर के ठीक करना एक है, जो ऑनस्लॉट्स होते हैं इसको रोकने की सावधानी दूसरे है, दोनों साथ साथ चलेंगे। Well, refraining to comment much on the controversy, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister, I beg your pardon, KP Maurya, said let law instead take its own course. इस प्रकार के बयानों को जब चर्चा में लाते हैं आप, अब मैं कोई प्रतिक्रिया कर दे दूंगा तो फिर उधर कोई आपका साथी जाएगा प्रतिक्रिया लेगा, फिर वो मीडिया के लिए FIR भी दर्ज होगी उस पे। नहीं, जो दोषी होगा कानून अपना काम करेगा। Let's quickly on that note open this up. We have Anila Singh, spokesperson of the BJP, with us, along with leader of the Congress party Vivek Bansal. An advocate and political analyst Syed Hasanul Haq is also with us on the broadcast. But my first question is to Vivek Bansal, because we just played out the reaction, Mr. Bansal coming in from Rashid Alvi of the Congress, who instead of taking note of what has been said by Tauqir Raza on how this can be very, very dangerous as far as our own national security is concerned, our own integrity is concerned, and our unity is concerned. All of that is at stake as far as these kind of comments are concerned. And yet, instead of focusing on that, he wants to now focus on Hindu Rashtra. Why, sir? How does it make sense? You see, let me just say, when you are talking about or when you have singled out, definitely nobody would approve what Mr. Tauqir Raza is saying. But at the same time, we have to be sensitive enough to take a holistic view of what he is saying. We have to go deeply into that. And definitely, be it mein Hindu Rashtra, be it mein whatever Mr. Tauqir Raza is talking about, we have to go by our constitution, what our constitution says. Constitution talks about... Are you condemning what Tauqir Raza has said? Sorry? Are you condemning what Tauqir Raza has said? Yeah, definitely I'm condemning it. So why is it that your party was open to his invitation of extending his support in the Uttar Pradesh elections? Is talking about on religious lines about this country, I think they have to be uniformly condemned, and Tauqir Raza is no exception. Then my question to you is, definitely we condemn it. Mr. Bansal, my next question to you is, if you condemn it, why is it that your party doesn't quite agree with you? Mr. Vivek Bansal, hold on, listen to what I'm asking you. If you condemn it, why is it that your party doesn't think that opinion perhaps holds any merit? Because we've seen how Tauqir Raza was more than willing to extend support to the Congress party ahead of Uttar Pradesh elections, and that invitation was openly welcomed by your party leaders. Priyanka Gandhi Vadra, as you can see on your screens, the first visual that we've put out can be seen posing I know that him in you a don't have to photograph. remind me about that. Let me answer that. You definitely cite about the arrangements which was there in the elections and in the recent Vidhan Sabha election. Definitely, you are talking about that. What would you say about BJP aligning with Kashmir in Mehbooba Mufti, who at the same time what sort of utterances or what sort of she talks about unless and until Pakistan problem is solved, this Kashmir problem cannot be solved. Who was joining hands? I think definitely if the BJP did join hands with the PDP, as you're pointing out, that alliance did quite work out, and they had to part ways. The result was for everyone to see. But why are we bringing in the Jammu and Kashmir issue here, wherein you have this person and Mr. Vivek Bansal? There are 5 to 6 statements, very questionable in nature. Mr. Bansal, hold on. Let me put out my question. Let's go point by point. Let's not speak over each other. There are at least 5 to 6 statements on record that we've managed to pull out, and look at the kind of hate calls he's giving openly. And it's not as though all of these hate calls have been given after UP elections. Priyanka Gandhi
Vadra and anyone in the Congress party was as aware of his credentials and yet decided to join hands with him, yet decided to take in his support. In all earnestness, let me say that we don't approve it. It needs to be condemned in no uncertain terms, definitely. But at the same time, when I say that we have to have a comprehensive view, these sort of utterances taking place anywhere, they need to Mr. be Bansal, this is beyond my understanding. You condemn it. You don't quite believe in what he believes. You don't quite agree to his ideology. You don't quite agree to him giving open calls for a Muslim Rashtra. Yet you continue to maintain that yes, we did quite join hands with him, and that's fine. That's a part of our political strategy, and we did resort to it. It's not quite making sense, Anila Singh. Sorry? Your voice was breaking. My Ram Ram to everyone, and you must have heard. Can I? Yes, Am I audible? Go ahead, go ahead. All right. You must have read one story in your childhood days, Ali Baba or Chalis Chor. So whether we talk about Congress party, whether we talk about Samajwadi party, we talk about BSP, TMC, all these political party which shares one ideology, and that ideology is of politics of appeasement. So they all are Chalis Chor. So whenever a person, a lunatic person like Tauqir Raza, he makes a statement, they jump in and they start advocating for him. The reality is what Mr. Tauqir Raza is saying, he is saying because he is being sponsored by Congress party. We just saw, we saw the picture on your channel as well. He is standing in a group so intimately with the leader Priyanka Vadra. Intimacy is publicly shown that yes, this person is ours. And so he is in our core group. So whatever he is saying, whatever bitterness he is showing towards Hindus, whatever crap he is talking about Sanatan, so we can very well understand. Okay. It is being sponsored by Congress party. So in today's date, if anything good is happening in Uttar Pradesh, I come from Uttar Pradesh, definitely I've got all the soft hearts and all kudos and applause for the present Chief Minister. Since he has come, proper respect has been given so to Congress's Astha. political backing. About Rangotsav, Anila Singh, you're telling us it's Congress's political backing. The patronage being extended by the Congress party to the likes of Tauqir Raza that have today emboldened them to an extent that they can make such hateful remarks in public domain without any remorse, because he's clearly not apologetic about any of his remarks. He goes on to say ki hamari lathi kamzor nahi. Can you believe it? Absolutely. Can I Syed Hasanul Haq, let him respond to this. How is this justified? This kind of mentality at play, Mr. Hasanul Haq, लड़ाई हमारे खून में है, हमारी भी जो हमारा भी डंडा है वो बहुत मजबूत है, और ये प्रोवोकेशन बार-बार क्यों? Why is an attempt being made to provoke the youth of the country? We are one country, we are India, we don't need any other Rashtra, sir. आदाब, विवेक भाई को भी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज चैनल का। मैं अपनी बातों को मौलाना तौकीर रजा साहब पे रखूं, उससे कबल मैं अपनी बातों को समझूंगा। तथा कथित मैं जो बात कहूंगा अपनी आप सवाल करना चाहूंगा मैं। बस ये बताइए सर हमें, हसन हलुक साहब, मुद्दे की बात करते हैं, बस ये बताइए कि जो बयान उन्होंने आज दिया है, जो बयान वो देते आए हैं, वो सही है या गलत है? मेरे मुंह में रख के मेरे जुबान से नहीं बुलवा सकती ना, ठीक है? अपनी बातों को मेरे जुबान में रख के आप नहीं बुलवा सकते। मैं कोई बात नहीं रख रही हूँ सर, मैं आपसे सिंपल सवाल ये पूछ रही हूँ, फर्जी राष्ट्रवादी सही है या गलत है? हसन हलुक साहब, सही है या गलत है? जवाब नहीं, ऐसे मैं कोर्ट में नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं कोर्ट में नहीं खड़ा हुआ हूँ कि सही है गलत, ये सही है या गलत है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर नहीं चाहिए आप अगर डिटेल्ड डिस्कशन अराउंड द टॉपिक, सो लेट्स कम टू द पॉइंट, गो अहेड, मेक योर पॉइंट। मैम, तथाकथित फर्जीवादी जो राष्ट्रवाद जो कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की जो आरएसएस संघ के प्रमुख जो है मोहन भागवत कहते हैं या क्या नाम है धीरेन्द्र शास्त्री या अलग अलग बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं, क्या ये सही है? क्या ये कहना सही है? मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूं। उसका जवाब क्या आप मुस्लिम राष्ट्र का कॉल देने में समझते हैं? तो आप आज सिर्फ हिंदू राष्ट्र की नहीं बात हो रही है, आज राजस्थान के अंदर और राजस्थान से अलग अलग पार्ट में जो जुड़े हुए लोग हैं, भीलिस्तान की मांग हो रही है, खालिस्तान की मांग हो रही है। तो मैं कहता हूं अगर है कि लोग अगर 2014 से जो स्टार्ट किया गया है हिंदू राष्ट्र, जो तथाकथित लोग हैं जो हिंदुस्तान के संविधान की जो
चैलेंज करके जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, तो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर भीम राष्ट्र की मांग करता हूं। मैं आपके चैनल से कहता हूं भीम राष्ट्र की मांग करता हूं। मैं अनिला सिंह को आपका जवाब देने दूंगी, पर उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जो ये लाठियों की, डराने धमकाने की, मेरे लोग अगर लॉ को अपने हाथ में ले लेंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो कहीं छुपने लायक नहीं रहेगा कोई, ये सब बातें सही है सर क्या? देखिए, मैं सीधी बात मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की एकता, अखंडता को और संविधान पे चोट करने की कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है, मैं उसके विरुद्ध हूं, उसके साथ नहीं खड़ा हूं। मैं गांधी का मानने वाला हूं। जो गांधी जो अहिंसा की बात करते हैं उस पे मैं मानता हूं। सी बात है सर। An attempt has been made by Tawqir Raza on multiple occasions to whip up communal passions, and it is wrong. It must not be justified. No one must support the statements he's made, not just today, in the past as well. But to your limited charge leveled at the BJP and the RSS, Anila Singh, how would you respond? It is so unfortunate, like when people come on debate, and especially on national channels, why are they not updated by proper knowledge? I heard Mr. Bansal, and I heard the young gentleman as well, and they have got huge, I think the proper word I'm not able to find, but somehow I found the hatred towards the word Hindu, and especially when we talk about about Hindu Rashtra. So they should go and read about the verdict which was given by Honorable Supreme Court about Hinduism. All right. So you might be hating Sanatan, you might be hating Sanatanis, and you are making 2 + 2 4 by saying that Hindu means Sanatan and Sanatan means Hindu. So if anything is talked about Hinduism, Hindutva or Hindu Rashtra, it means Sanatan. So first of all, you do not have any clarity. You should go and read the verdict given by Honorable Supreme Court, and you will understand the word and you will understand the meaning of Hindu, Hindutva, Hinduism, and then you can make your bitter statements towards Hinduism, Hindutva and Hindu Rashtra as well. Because you are one person who is so biased. Who is so, one person means I'm not talking about one of the panelists, I'm talking in general, those people who talk against Hindus, who talk against Hinduism or Hindutva or Hindu Rashtra. So it is a way of life, a balanced way of life, where respect to all religion is also given, women are given respect, progressive mindset is there. So this is what Hinduism, Hindutva is. If you have got huge problem, the limited question is, since you mentioned RSS and Mohan Bhagwat, Syed Hasanullah, okay, Anila Singh, hold on. You've responded to him. Let me take in a quick comment from Mr. Hasanullah. And Mr. Hasanullah, we'll not speak over each other. That really cancels out the entire purpose of the debate. But because you raised the RSS issue and you also spoke of Mohan Bhagwat, let me also tell you that many Muslim clerics, many from the minority community in the recent past have hailed his outreach towards the Muslim community, because on multiple occasions, not only has his meeting spoken in absolute terms of how he's reaching out to the minority, but he's also spoken of how one ideology cannot make or break the country. He's spoken of that. He's also spoken of how the RSS will continue to reach out to the minority, but you want to cherry pick. You want to create hate. You want to keep spreading this hatred in terms of saying that, look, the RSS is trying to create a Hindu Rashtra. मैं 2 बातें बोलूंगा यहाँ, ठीक है। सबसे पहले, हिंदुस्तान जो है हमारा देश, संविधान से चलेगा, ये आरएसएस के कट्टरवादी मानसिकता से चलेगा। जिन लोगों ने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वो हिंदू कट्टर मानसिकता तौकीर रजा की नहीं है। क्या आप सिलेक्टिव आउटरीच जो अपना सामने रखते हैं ना हसनुल्लाह साहब, वो दिक्कत है। मैं कह रहा हूं, इतने नफरत के बयान उन्होंने इतने टाइम दिए हैं, आप उस पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं सर। हिंदू और हिंदुत्व में वही फर्क है जो भगवान श्री राम को मानने वालों में फर्क है और रावण को मानने वाले। हिंदुत्व के मानने वाले रावण के मानने वाले हैं, रावण की औलाद है, और जो है मोहन भागवत जो इनकी औलाद है।
ये कट्टर मानसिकता की औलाद है। सर, और कट्टर हिंदू भगवान राम कट्टर के मानसिकता मानने वाले कट्टर मानसिकता पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हिंदू- कट्टर मानसिकता को तो आप बिल्कुल भी कंडेम नहीं कर रहे हैं और वो हमने देख लिया है पिछले 15 मिनट में। नॉट वंस हैव यू सेड सर दैट ऑल ऑफ दीज कमेंट्स ही मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम बिकॉज it spreads hatred in the society. My limited point was just as to why, despite these hateful remarks being made time and again, why is it that political parties like the Congress continue to take help and continue to extend support to these kind of elements in our society that are only looking at creating a divide in the society, are only looking at creating or rather whipping up communal tensions. That was my limited point, and that's exactly why we were having this detailed conversation, but that's all the time we have for. Gentlemen, Anila Singh, thank you for joining us this evening. Without a short break.